So today we are going to see amino acids chapter. So we have seen carbohydrate from your biochemistry, we have seen lipids from your biochemistry, we have seen vitamins from your biochemistry, right? So carbohydrates and its metabolism we have already completed. After that we have seen the diabetes chapter, right? And chemistry of cell. After that we have seen the lipid chapter, we have seen the chemistry of cell, right? We have seen the lipid, and after that we have seen the hypolipidemic drugs. We have seen the vitamins also. Now next chapter from your biochemistry is nothing but the amino acids and proteins. Again this chapter is important for your GPAT and all other exams. Amino acids and proteins. So today I will try to complete amino acids. Tomorrow we will discuss about the proteins. So first of all, again there are different biomolecules in your body, right? So you know that carbohydrate, okay, they have energy purpose and various other functions in your body. Then we have seen the lipids, they are known as a reserve food of your life. So carbohydrates, they are immediate food of your life, right? And lipids are the reserve food of your life. So likewise that there is another biomolecule known as a proteins. So they are also very important for your body. They are the most abundant organic molecules in your living system. Proteins are the most abundant, they are found frequently. They have different function, like some of them are like a bricks. So if you want to build up your house, you need a bricks. So these proteins, they are a bricks for your body. They have structural function, ओके, और स्टैटिक फंक्शन. जो प्रोटीन्स होते हैं उनके दो फंक्शन होते हैं. एक तो स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन को ही अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन, एंड उनका एक डायनामिक फंक्शन भी होता है. ओके, सो प्रोटीन्स आर अगेन ए वेरी अबंडेंट मॉलिक्यूल्स इन योर लाइफ, in your body. They have different function. They serve basically two functions. They serve basically two functions. First one is a structural function. Structural function, structural function, or you can say static function, and it is nothing but they are engaged in the building of your body. So they are the bricks for your different structures in the body. So for example, your skin, that is made of a protein. So in the skin you have collagen, elastin, okay, also found in the bone matrix. Okay, so your blood vessel is also there, it is also made up of collagen, elastin. Okay, you have keratin, in your nails, in your hairs, etc etc. आपके बालों में, आपके नाखूनों में क्या है, केराटिन है. So what are they? These are nothing but the proteins, collagen, elastin. So they are the structural proteins, they are the building blocks for your organs. Okay, they are nothing but the bricks of your house. Okay, bricks म्हणजे विटा. आपण घर बांधण्यासाठी काय करतो, विटा यूज करतो. विटा म्हणजे काय, बिल्डिंग ब्रिक्स ऑफ युअर हाऊस. सो लाइकवाइज दैट proteins are also bricks of your body, right? So structurally they are important, they have some structural function like collagen, elastin, alpha keratin. They are found in the different tissues. Alpha keratin is found in the epidermal tissues, keratin is found in the tissue, epidermal tissue, as well as it is found in the nails, it is found in the your hairs also. So protein has a two type of function. First one is a static function or known as a structural function. Second होता है उसका dynamic function. Dynamic function includes the working. Okay? Dynamic means to work. Okay, so you can say dynamic function of your protein is nothing but the working horses of your system. Dynamic function of protein includes they act as a enzymes for your body's metabolism. So all enzymes are there protein in nature. Okay, all hormones, they are protein in nature. Blood clotting factors, they are involved in the they are involved in the blood clotting process. So all they are nothing but the protein. So आपने देखा है, when we have seen already blood, so in that you have different blood clotting factors. Most of the books they have mentioned 13 blood clotting factors, but actually there are 16 blood clotting factors. What are they? They are nothing but the protein. What type of protein? They are the glycoproteins. All blood clotting factors are the inactive glycoprotein in your blood,
right? So their function is to clot the blood, to seize the blood, to stop the blood. That is the hemostasis, right? So proteins, they either they act as a structural, or they have a structural function or static function. So they are the building bricks for your body, or they have some dynamic function, right? So for example, they act as an enzyme. Enzymes are nothing but the protein in nature. Hormones, okay, to message. Then blood clotting factors are there. Immunoglobulins, they are involved in the immunity of your body. So they are called as a working horses of your cell. So dynamic function of your proteins is nothing but the working horses of cell. Okay, and structural protein, they are nothing but the building bricks. They are the building bricks. Okay, so they are the proteins. Now what are the protein? Protein are nothing but the polymer of amino acid. प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर होता है. किसका होता है भाई? अमीनो एसिड का. प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. लेकिन कौन सा? सो अमीनो एसिड आल्सो दे आर आल्सो हैविंग isomerism in their structural isomerism. Okay, so alpha D amino acids, so L alpha amino acids and alpha D amino acids. Okay? There are two type of amino acids found in the nature, but proteins are the polymer of L alpha amino acids. So alpha amino acids, proteins are the polymers of L alpha amino acids. You have to remember. So as you know, polysaccharides, polysaccharides are the polymer of monosaccharides. So likewise, lipids are the polymer of fatty acids. So likewise, that proteins are polymers of amino acids. Okay. So basically, they have two functions: static function or dynamic. Static function or structural function, and then dynamic function. We have seen that dynamic function means they are the work. They are working horses of your cell. So like enzymes, hormones, blood clotting factors, immunoglobulins, and all that. Structurally, they are found like protein, collagen, elastin found in the skin and bone. Then your keratin is found in the your epidermal tissue, also found in the nails, ears, etc. etc. Plasma proteins are also there. Now, protein is again organic compound. Is an organic molecule. It is composed of different elements. So protein में भी बहुत सारे elements होते हैं जैसे. So in the protein, carbon is there, oxygen is there, nitrogen is there, sulfur is there. So 55% carbon is there. Oxygen you can, for oxygen you can say 16%. Nitrogen is less than that, and again sulfur is less than that. Okay, so protein has a different elements. Okay, am I audible to you clearly? Are you able to see the screen properly? So these are, okay. So carbon, oxygen, nitrogen, sulfur. These are the, okay. These are the four elements. Okay, and one more element is there in a, okay. So selenium, carbon, oxygen, nitrogen, sulfur, and selenium. So rarely selenium is also present in the structure of protein, because in the amino acid also new 21st amino acid has been discovered known as a selenosystem. So in that selenium ion is there. So these are the structure. Okay, proteins, they are composed of carbon, oxygen, nitrogen, sulfur, and selenium. Okay, so out of that, nitrogen is the most abundant in the protein. Nitrogen सबसे ज़्यादा होता है protein का component, right? Now it is determined, the content of nitrogen in the protein is determined by one method known as a, it is determined by method one known as a केज-दाल method. So इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So nitrogen content in the protein can be determined by, or can be assessed by, or can be measured by केज-दाल method. Okay, केजल-दाल method. आप जो जैसे प्रोनाउंस करना चाहते हो वैसे कर सकते हो. Okay, so protein content in the nitrogen content in the protein or amino acids, that is measured by this method, केजल-दाल method. So it is one of the analytical tool to determine the nitrogen content. Very important question आ चुका है इसका. Okay, you have to remember. Now proteins are nothing but the polymers of L alpha amino acid. Okay. A simple line is there, but they can ask question on this. So proteins are nothing but the polymer of L alpha amino acids. Okay, so amino acids. Right. Now in the nature there are around 300 amino acids. Nature में बहुत सारे amino acids होते हैं, but out of that mostly 20 amino acids they are found in the structure of protein. So जो भी protein लेंगे आप उसमें most of the 20 amino acids ही मिलेंगे. So they are the repeating units of these 20 amino acids. Most of the proteins they will have only these
standard 20 amino acids. Okay, so in the nature almost 300 amino acids are found, but only 20 amino acids they are known as standard amino acids, and they are found in the structure of protein. Okay, so what is amino acid? Amino acid क्या होता है? Okay. So amino acids they are the again organic molecules, organic compounds containing two functional group. तो amino acid, amino मतलब amino group और acid मतलब acidic group. So in the amino acid you can see in the name, आप बोलते हो नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा होता है, जैसे amino and acid. So amino means NH2 group, so acid means COOH group. So amino acids are the organic compound containing two functional groups. कौन से होते हैं भाई? Amino. So first is a amino group NH2, and second one is a carboxyl group. Carboxyl group, okay? That is a COOH. So amino acids are nothing but the organic compound composed of amino group and carboxyl group. Okay, attached to a side chain known as a R group. Well, so that side chain may be different. Based upon that, they are classified. Okay? Now nature में around 300 molecules होते हैं amino acid के, but all 300 amino acids are not found in the protein. Okay, in the most of the proteins only repeating 20 amino acids are found, and that's why they are known as standard amino acids. Okay, so question अगर आता है आपको, how many standard amino acids are there in a nature? So 20 amino acids they are known as standard amino acids. There are 300, but 20 are known as standard amino acids because they are mostly found in the structure of protein. Okay? Now recently 21st amino acid also has been discovered, and 22nd amino acid has been also discovered. उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है recently. 21st amino acid, remember क्वेश्चन आ चुका है. 21st amino acid has been identified recently, and it is known as a selenocysteine. It is known as a selenocysteine. तो आपको याद रखना है selenocysteine is a 21st amino acid. क्वेश्चन उसके ऊपर आ चुका है. And again recently 22nd amino acid is also found. So 21st amino acid is a selenocysteine. याद रखना है आपको इसको. 22nd amino acid is nothing but the pyrrolysine. So 22nd amino acid is nothing but the pyrrolysine. So 21st amino acid is nothing but the selenocysteine, and 22nd amino acid is nothing but the pyrrolysine. So नेचर में 300 अमीनो एसिड होते हैं, उसमें के 20 अमीनो एसिड क्या है? 20 अमीनो एसिड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है. So they are known as standard amino acids because they are found in the structure of protein. They are found in the repeatedly in the structure of protein. That's why they are known as a standard amino acids. Okay? And genetic code is also available for only 20 amino acids. So genetic code will code only 20 amino acids. That's why also they are known as a standard amino acids. But recently two more amino acids has been found. 21st amino acid is nothing but the selenocysteine, and 22nd amino acid is nothing but the pyrrolysine. Now they are also coded by codon known as a stop codon or nonsense codon. आपने 12th में पढ़ा होगा stop codon, nonsense codon. नेक्स्ट देखने वाले हैं इसमें भी. So 21st amino acid that is coded by this codon. 21st amino acid is coded by UGA codon. That is a stop codon. And 22nd amino acid जो होता है pyrrolysine. So pyrrolysine is coded by this UAG. So UGA and UAG they are known as a stop codon or nonsense codon, and they codes these amino acids. Okay. So remember 21st amino acid को क्या बोलेंगे भाई? Selenocysteine. 22nd को क्या बोलेंगे? Pyrrolysine. क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. Right. Next we'll see. Now these amino acids they are having isomerism. So they have two type of isomers: structural isomers and geometrical isomers. Okay. Now their structural isomers are depicted in comparison with the lactic acid. जो जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट में होता है, so carbohydrate is also compared with the lactic acid. Okay. So in the similar way, amino acids also given the names D and L amino acids, dextro and levo amino acids, based upon the with the reference of L lactic acid and D lactic acid. So L lactic acid, the OH group on a second carbon is also on the same side as that of the terminal OH group of alcohol. So that's why L. If it is opposite D, likewise that.
So amino acids are also D and L amino acids, but okay, because optical isomerism due to asymmetric carbon atom. So most of the amino acids they are optically active. Most of the amino acids they are optically active, and because they have one asymmetric carbon atom. Okay, all amino acids are optically active except glycine. इसके ऊपर कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है. Which amino acid is not optically active? So glycine is optically inactive amino acid. So all amino acids which are optically active, they have chiral center, they have asymmetric carbon atom. That's why there are two isomers, D and L isomer. Well, and but this glycine has a not having any asymmetric carbon atom. Glycine में कोई chiral carbon नहीं होता है, asymmetric carbon atom नहीं होता है. That's why glycine is a asymmetric है ना. It is a asymmetric and that's why glycine is a optically inactive. तो याद रखना है भाई यहाँ पे 20 amino acids they are optically active except glycine. All amino acids they are optically active except glycine. Glycine is a optically inactive amino acids. ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली में 2019 में जीपैट में 2020 में भी आ चुका है, इसके पहले भी आ चुका है, बहुत बार आ चुका है कि है ना, which amino acid is optically inactive. First amino acid जो होता है glycine, it is optically inactive, right? Because glycine does not have any asymmetric carbon atom. There are different ways to classify these amino acids. Amino acid को classify करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे based upon the structure, based upon the based upon the nature, acidic or basic, based upon the polarity, polar, semi-polar, non-polar, based upon the nutritional importance, है ना. Nutritional importance के ऊपर जैसे for example essential amino acid, non-essential amino acid, semi-essential amino acids, ठीक है. So based upon the structure they are classified in different classes. We are going to see that. Based upon polarity, either they may be polar, non-polar, you know. Based upon the nutritional importance, they may be either essential amino acids, semi-essential amino acids, non-essential amino acids. Based upon the metabolic weight, मेटाबॉलिज्म के बाद में उनका क्या बनता है ना, उनका मेटाबॉलिज्म होने के बाद में क्या बनता है, तो उसके बेसिस के ऊपर भी उनका क्लासेस क्या है. सो बेस्ड अपॉन दैट दे आर क्लासिफाइड इनटू अदर ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड और केटोजेनिक अमीनो एसिड्स. तो अगर जो अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म हुआ है उसके बाद में अगर उससे ग्लूकोज बनता है उसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, है ना. अगर मेटाबॉलिज्म होने के बाद में अगर उसको उसके उसका एसिटिल कोई बनता है मतलब कीटोन बनता है ना, तो उसको बोलेंगे अपन कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स. सो अमीनो एसिड्स दे आर क्लासिफाइड इन अ डिफरेंट वे. इट इज जस्ट preliminary information to you. So amino acids are nothing but the polymer. Amino acids are nothing but the monomers for protein. So proteins are nothing but the polymers of amino acids, L amino acids. Okay? And in the nature most of the amino acids they are in a L. Okay, they are the Leo amino acids. So L alpha amino acids. Okay. So proteins are the polymers of L alpha amino acids. Okay. प्रोटीन का फंक्शन दो होता है, स्टैटिक फंक्शन होता है, एक डायनेमिक फंक्शन होता है, राइट. Then 20 amino acids they are known as standard amino acids. Out of amino acids, lot of amino acids they are found in the nature, almost 300 amino acids. But out of that only 20 amino acids they are known as standard amino acids, right? Because they are the found in the protein. Amino acid means amino group plus carboxyl group. So organic compound containing two groups. Right? Amino acid. So 20 nature में होता है, 20 amino acid they are known as standard, but 21st is known as a selenocysteine. 22nd is known as a pyrrolysine. So selenocysteine has an important role in the body. Pyrrolysine का role मालूम नहीं है अभी तक. They are coded by this UGA and UAG, right? So these amino acids, are you getting or not? समझ रहे हैं आपको? Are you getting or not? So next one is nothing but the, again what do you mean by proteins? So they are nothing but the polymer of amino acids. So again they are the most abundant molecules in the organism, living organism. So out of that, if you try to analyze the content of cell, अगर आपका एक cell है ना, उसका content analyze किया, so 50% if you analyze the weight of cell, so 50% dry weight content of cell is nothing but the protein. So 50% cell में क्या रहेगा, protein रहेगा. So that's why they are known as the most abundant. They are the most abundant organic molecules. Most abundant organic molecules. Right? Now they have two functions: static function and dynamic function. Okay. Now this protein is the term. It was derived from one term known as a proteose.
ये प्रोड्यूस नाम का एक टर्म होता है, so that is a Greek term. So what I mean by produce? Produce means holding a first place or priority, holding a plus first place or priority or first, है ना, sequence में first को आता है. So produce means first. So that's why they hold the first place in the cell proteins. So they are the very important for your life. But Berzelius is the scientist who coined the term protein. Berzelius नाम का scientist ने protein term coin किया. It was a Dutch scientist. Function क्या है proteins का? So they may be either having static or structural function. They are the structural bricks of your body and responsible for the strength, mechanical strength of your body. Collagen, elastin, alpha keratin. These are the some proteins found as a structural protein. Or dynamic proteins or dynamic function. They act as an enzyme, hormones, blood clotting factors, immunoglobulin, membrane receptors. They also has a storage protein. Muscle, okay, muscle contraction is also function. Respiration, okay, function in the genetic control. Okay, they are called as a working organs of cell. What is the composition of protein? Protein में composition क्या क्या रहेगा? So carbon proteins are made of 50 to 55% carbon will be there. 6 to 7.3% hydrogen is there. Oxygen 19 to 24%. Nitrogen 13 to 19%. Sulfur is there 0 to 4%. And other elements also found in the protein. So it may be either phosphorus, ferrous, copper, and iodine, okay, manganese, zinc, etc. etc. Selenium. Now nitrogen content in the protein is measured by or determined by Case-Dall's method. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है nitrogen determination of in case of protein or it is determined by Case-Dall methods. इसके ऊपर GPAT में भी क्वेश्चन आ चुका है. Proteins are the polymer of L alpha amino acids. L alpha amino acids. Oh, amino acid का structure देख लेते हैं general. So it is known as the general structure of amino acids. Now amino acid means a organic compound having two groups. First group is nothing but the amino group. तो organic compound में दो group रहेगा, amino group and carboxyl group. Okay, and there is one side chain. Okay, there is one side chain. Now the carbon to which both amino group as well as carboxylic acid group is attached. जो कार्बन को दोनों ग्रुप अटैच होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप और आपका अमीनो ग्रुप, उसको अपन बोलने हैं अल्फा कार्बन. So this carbon is known as alpha carbon. Okay, so carbon at which amino group is also there and carboxyl group is also there. So that carbon is known as a alpha carbon atom. That carbon is known as a alpha carbon atom. That's why that carbon is known as a alpha carbon atom. And this R is different in the different amino acids. But this is the general structure of amino acid. So amino group, carboxyl group, which is attached to a carbon known as a alpha carbon atom. And if in this case, अगर R भी hydrogen होता है, so that is known as a glycine. Sorry, that is known as a glycine, which is optically inactive. ना CH2CO minus NH2 ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है ग्लाइसिन का. अगर R भी अगर H होता है तो फिर ये से जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक नहीं रहेगा. अगर R डिफरेंस है तो ये एसिमेट्रिक बनता है और उसके बाद में उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं. बट ग्लाइसिन will have only hydrogen in place of R. That's why it is not having asymmetric carbon atom. That's why optically inactive. Okay. All other amino acids are optically active except glycine. Now classification of amino acid based upon the nutritional importance. Classification अलग-अलग टाइप से होता है इनका. Structural classification based upon the nutritional importance, classification based upon the polarity, classification based upon the है ना, तो अलग-अलग टाइप का क्लासिफिकेशन होता है ना. So polarity, acidity, basicity. So classification based upon the structural classification we'll see in a later slide. First we'll see classification based upon the nutritional importance and polarity. तो nutritional importance कितना है उसका amino acid का, उसके बेसिस पे उसका classification. So it may be either essential amino acids. Essential amino acids. Essential मतलब क्या?
they are not bio they are not bio they are not biosynthesized in the body, and that's why they should be supplemented in the diet. These amino acids, they are not biosynthesized in the body, that's why they should be supplemented in the diet. So what are these? तो अमीनो एसिड जो है इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? देखो अर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, लूसीन, आइसोलूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, phenylalanine, threonine and tryptophan. These are known as the essential अमीनो एसिड्स. तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? तो इसको याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है ना. Essential amino acids, they can be remembered as a PM विठल. विठल जो है आपके कॉलेज में जो विठल है वो बन गया अभी PM. सो PM विठल, PM विठल. विठल का स्पेलिंग VITTHAL. P मतलब क्या? फिनाइललाइन. M मतलब क्या? मिथ्योनिन. V मतलब क्या? वैलिन, है ना. I मतलब क्या? I मतलब आइसोलूसिन, है ना. T for tryptophan, T for, है ना, T for threonine. Then H for histidine, A for arginine, okay, and L for again lysine and leucine. So PM विठल is a trick. ऐसा लिख सकते हो. So how you can remember the essential fatty acid? You can remember the essential fatty acid by any one of the following trick. तो यहाँ पे दिया है मैंने PH विल्मा, है ना, मैट विल, ओके, मैट विल, PH विल्मा, और अगेन एक और ट्रिक है PM विठल, PITTHAL, PITTHAL विठल, PM विठल. यहाँ पे लिख नहीं सकता मैं प्रॉपर्ली इसलिए. सो रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर दिस इसेंशियल अमीनो एसिड बाय PM विठल. तो विठल क्या बन गया? PM. अभी नरेंद्र मोदी का कार्यकाल खत्म हो गया, अभी विठल को PM बनाना है. तो PM विठल मतलब क्या? इसेंशियल अमीनो एसिड्स. क्योंकि क्वेश्चन आता है विच आर द इसेंशियल अमीनो एसिड्स और वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इसेंशियल अमीनो एसिड. याद कैसे रखना है उसको? PM विठल, है ना. अर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, लूसीन, आइसोलूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलअलानिन, थ्रेओनिन एंड ट्रिप्टोफैन. तो यहाँ पे लिखना है आपको कैपिटल में PM विठल लिख लो और एक एक टर्म कोरिलेट करो, सब आ जाएगा आपका. PM विठल, और आपको ये भी लिख सकते हो चाहे तो PM विल्मा, मैट विल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ essential amino acids, they are not synthesized in the body, they should be supplied from diet. Okay, now semi essential amino acids. So there are two amino acids known as a semi essential. Okay, कुछ बुक्स में दो दिए बट कुछ बुक्स में सिर्फ एक ही दिया है. This is the histidine. So histidine can be biosynthesized by adults, not biosynthesized by children. बच्चों में ये हिस्टिडीन बायोसिंथेसाइज नहीं होता है बॉडी में, लेकिन एडल्ट्स में ये होता है. दैट्स व्हाई इट इज अ सेमी एसेंशियल. सो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स arginine and histidine. Now non-essential amino acids. Non-essential amino acids, they are also known as a dispensable amino acids. Dispensable amino acids, non-essential. Or okay, so glycine, alanine, serine, cysteine, aspartate, aspargine, glutamine, tyrosine, proline. Now they can be remembered. Okay, they are synthesized in the human body, and that's why they are known as a non-essential amino acids. आप बोलेंगे सर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को याद कैसे रखना है? अगर आपको इसेंशियल याद रह गए तो बाकी जितने भी है वो क्या है? सब नॉन एसेंशियल है ना. PM विठल आपको याद है, इसेंशियल अमीनो एसिड अगर याद है ना. एक सेमी एसेंशियल एक ही होता है, दैट इज द हिस्टिडीन, है ना. तो बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या है? नॉन एसेंशियल है. तो इतना सिंपल है, ठीक है. सो आर यू गेटिंग और नॉट? समझ रहा है नहीं? आर यू गेटिंग और नॉट? सो PM विठल को याद रखो, वो आपका काम कर देगा. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द classification of amino acid based upon the polarity. Classification of amino acid based upon the polarity. So on the basis upon the polarity, they may be either polar, non-polar. Right? So non-polar amino acid, also known as a hydrophobic amino acids. Non-polar amino acids or hydrophobic amino acids कौन है भाई? ये है ना, alanine, leucine, isoleucine, valine, methionine, phenylalanine, then
ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलीन, दे आर नोन एज अ नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। दूसरा होता है भाई पोलर अमीनो एसिड्स, पोलर अमीनो एसिड विद नो चार्ज ऑन द आर ग्रुप, जो साइड चेन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मतलब, है ना। सो पोलर है लेकिन उसके साइड चेन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सो ऐसे कौन है भाई, ग्लाइसिन है, थ्रियोनिन है, सिस्टीन है, सिस्टाइन है, ग्लूटामाइन, ओके, ग्लूटामाइन, टायरोसिन एंड एस्पर्जिन। So glycine, threonine, cysteine, okay, cysteine, glutamine, tyrosine, and asparagine. So they are the polar one, but they are not having charge on the side chain. Now next होता है polar amino acid with the positive charge on the side chain और R group. उसका example है भाई lysine, arginine, and histidine. अब polar amino acid with the नेगेटिव चार्ज ऑन द साइड चेन, उसका है एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। सिंपल है होता है, बस इतना सिंपल है। देखो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, जो एसिड होता है, सो एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड में पॉजिटिव चार्ज बेसिक अमीनो एसिड जो होते हैं ना, लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टीडीन, अर्जिनिन, हिस्टीडीन, लाइसिन, इसको याद रखते हो ला, एल ए एच, एल ए एच, एल ए एच, लाह, मींस बेसिक अमीनो एसिड्स, LAH, lysine, arginine, histidine. Okay, so polar, non-polar, polar with the positive R group, polar with the negative R group. So these are the classification based upon the importance, nutritional importance, and polarity of the amino acids. Again, based upon the structure, they are classified in a different classes. We'll see it. Okay, based upon the nutritional requirement also, they are classified in different way. So out of that histidine क्या है, histidine and arginine, arginine को छोड़ दो, histidine is a semi essential amino acid which is synthesized in the adult but not in a children. Yeah. Based upon the metabolic fate, amino acids are classified into different way. metabolic fate मतलब क्या, उनके नसीब में क्या है। आप गाना गाते हो ना, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, किसको कुछ मालूम नहीं। तो वैसा ही उसका नसीब क्या होता है अमीनो एसिड का, based upon the metabolic fate. So amino acids, they are okay after metabolism of amino acids, whatever carbon skeleton is remaining. So whatever carbon skeleton which is remained after metabolism of amino acids, so it whether it is a precursor for glucose or whether it is a precursor for lipids or fat, based upon that they are classified. Okay? So if whatever residue or whatever carbon skeleton which is remained after metabolism of amino acid, so if that skeleton gives that skeleton gives glucose, then it is known as a glycogenic amino acid. Question आता है, so what are the glycogenic amino acid? So alanine, aspartate, glycine, and methionine, they are known as a glycogenic amino acid. Now what do you mean by ketogenic amino acids? So they will give you keto acid, keto acid or precursor for lipid synthesis. So leucine and lysine, they are known as a ketogenic amino acids. तो याद रखना है ketogenic amino acids, ketogenic amino acids. Now we'll see the classification of amino acids based upon the structure, classification of amino acids based upon the structure. Now structure, based upon the structure, they are classified into different classes. So first one is nothing but the amino acids with the aliphatic side chain. So based upon the structure, they are classified as a amino acid with the aliphatic side chain. जो side chain रहेगा वो aliphatic रहेगा. So amino acid with the aliphatic side chain. Now every amino acid is designated by either 3 letters or by either 1 letter. जैसे यहाँ पे 3 letter लिखा है, 1 भी लिखा है. So it is not much important for you, but you should know. So amino acids should be designated by 3 letters or 1 letter. First class क्या रहेगा, amino acid with the aliphatic side chain. So in that you have 5 amino acids. So first one is known as glycine. Second one is known as alanine. Third one is known as valine. Fourth one is leucine. Fifth one is isoleucine. Fifth one is isoleucine. तो आप बोलेंगे सर इसको याद कैसे रखना है? So very simple है. Just take a one word of first word of your name of amino acid. So क्या आएगा? GAVLI. तो उसको बोलते हैं अपन गवली. तो गवली मतलब क्या होता है? तो जो दूध देता है आपको, है ना? तो आजकल के बच्चों को अगर पूछूंगा मैं कि दूध कौन देता है, तो आप गाय की बजाय बोलेंगे सर दूध वाला देता है. तो हमारे यहाँ पे दूध वाले को क्या बोलते हैं अपन?
गवली बोलते हैं. So GAVALI, GAVALI, G for glycine, A for alanine, V for valine, L for leucine, I for isoleucine. Okay. Now what is the structure of glycine? Glycine is designated by these three letters GLY, gly, or simply G. Now glycine has a simply CH2COO minus NH3, CH2COO minus NH3. Okay. Now this glycine is optically inactive because there is no chiral center in the structure of your glycine. That's why glycine is optically inactive amino acids. Glycine is optically inactive amino acid. फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है? ग्लाइसिन. याद रखना है आपको, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनेक्टिव. सेकंड अमीनो एसिड होता है आपका अमीनो एसिड कंटेनिंग एलिपेटिक साइड चेन, एलानिन. एलानिन का है ना, थ्री लेटर्स ALA होता है और सिंपली A. सो एलानिन मतलब क्या है? ग्लाइसिन में जो है ना हाइड्रोजन उसको निकाल के सिर्फ CH से डालो. ग्लाइसिन में देखो क्या था? हाइड्रोजन था. यहाँ पे क्या है? CH3 गया आपका एलानिन. नेक्स्ट आता है आपका वैलिन. वैलिन उसका VAL बोलते हैं, थ्री टर्म्स. वैलिन क्या है? इट इज नथिंग बट द वैलेरिक एसिड, CH3 है ना, CH3CH. इट इज अ साइड चेन. सो इट इज अ ब्रांच चेन हमारे इसमें. ठीक है. फोर्थ आता है ल्यूसिन. ल्यूसिन मतलब LEU. LEU में क्या है कि अगर और एक मिथाइल घुसा दो अंदर. पहले क्या था? पहले सिर्फ हाइड्रोजन था, आपने एक मिथाइल घुसा दिया तो बन गया. जब हाइड्रोजन था तो ग्लाइसिन, जब मिथाइल घुसा दिया तो एलानिन, और दो जो मिथाइल घुसा है उसके ऊपर भी दो मिथाइल लगा दिया आपने तो वैलिन. अभी क्या है कि जो वैलिन का जो जिसमें वैलिन में जो आपने दो मिथाइल पहले घुसा दी उसमें और एक मिथाइल डाल दो. यहाँ पे एक डाल दो CH2, तो उसको बोलेंगे अपन ल्यूसिन. ल्यूसिन में एक एडिशनल मिथाइल रहेगी. बाद में क्या है? तो यही ल्यूसिन का स्ट्रक्चर थोड़ा रीअरेंज कर दो आप. तो रीअरेंज कैसे करना है कि ये जो मिथाइल है यहाँ पे लेके जाओ, ये मिथाइल ये कार्बन से बजाय इधर लेके जाओ, हो गया आपका आइसोल्यूशन स्ट्रक्चर. आइसोल्यूशन. ठीक है. सो ग्लाइसिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, दे आर नोन एज अ एलिफेटिक साइड चेन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, GAVLI. गवली जो दूध देता है आपको. ठीक है. सो लास्ट थ्री अमीनो एसिड्स, दैट इज अ वैलिन, leucine and isoleucine. Valine, leucine and isoleucine, they are known as a branch chain amino acid. They are known as a branch chain amino acids. Okay. So these are the amino acids containing aliphatic side chain. Amino acid containing aliphatic side chain. समझ में आया ये? Yes or no? सेकंड क्लास आता है as per the structural classification. Amino acid containing hydroxyl group. अमीनो एसिड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें OH ग्रुप पड़ेगा. तो इसमें आता है आपका एक सेरिन देन थ्रियोनिन आता है एंड देन टायरोसिन आता है. थ्रियोनिन, सेरिन एंड टायरोसिन. टायरोसिन is also considered under the aromatic amino acid. That's why टायरोसिन we'll see in the next slide. Okay. बट आपको याद कैसे रखना है इसको, है ना? GAVALI, गवली फॉर aromatic, गवली फॉर एलिफेटिक साइड चेन कंटेनिंग अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड कंटेनिंग OH ग्रुप ST. ST मतलब क्या है ना? महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट का ST होता है अपना, लाल बस, लाल परी. यस फॉर सेरिन, T फॉर थ्रियोनिन, या फिर T फॉर टायरोसिन, या फिर आप ST स्क्वायर भी बोल सकते हो. सो सेरिन मतलब जो आपका अलानिन का स्ट्रक्चर है वही निकालो, बस CH3 को OH लगा दो, मतलब CH2OH हो जाएगा. दैट इज अ सेरिन. एंड थ्रियोनिन में और एक मिथाइल लगा दो बस. बोथ. ओके. ऑल दीज आर द हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. टायरोसिन we will see in the next slide. Okay. So GAVALI, गवली एंड ST, गवली ST, या फिर गवली का कैटेगरी ST ऐसा लिख दो. तो ऐसा नहीं ट्रिक वगैरह बना सकते हो, वैसे ज्यादा मैं ट्रिक्स के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ. नेक्स्ट होगा आपका कौन सा? नेक्स्ट क्लास है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. नेक्स्ट क्लास होगा आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. Sulfur containing amino acid. Now in that you have C square T. Okay. In that you have C square M. C square M मतलब CM है ना, CM जो है ना, C square M.
सी स्क्वायर एम, सी किसके लिए, सिस्टाइन, ESTEIN, सिस्टाइन, सिस्टाइन, देन सी फॉर अगेन सिस्टीन, सिस्टाइन, सिस्टीन एंड मिथिओनिन. रिमेंबर द सल्फर कंटेनिंग अमिनो ऍसिड, याच्यामध्ये काय असणार आहे, इसमें क्या होगा, सल्फर होगा. तो सल्फर कंटेनिंग अमिनो एसिड्स, राइट, सी स्क्वायर एम, सी फॉर सिस्टाइन, सी फॉर सिस्टीन एंड एम फॉर मिथिओनिन. नाउ सिस्टाइन, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टाइन, दिस इज स्ट्रक्चर. जो एलानिन का स्ट्रक्चर है वही निकालो, बस जो मिथाइल है वहाँ पे एसएच डाल दो. एसएच इज नथिंग बट द सल्फाइड्रिल. So they can ask you question like this: which functional group is present in the cysteine? Which functional group is there in a structure of cysteine? Cysteine में होता है आपका सल्फाइड्रिल SH. Okay. Now next one is the cysteine. So what is cysteine? It is a dimer of your cysteine. Cysteine जो है ना उसका ही dimer है, मतलब दो molecules of cysteine and two molecules of cysteine will combine together, so it will give you cysteine. सिस्टाइन के दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर सिस्टीन बनता है. तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे दो मॉलिक्यूल सिस्टीन के कंबाइन हो चुके हैं. दैट्स व्हाई रिमेंबर इन द सिस्टाइन यू हैव सल्फाइड्रिल ग्रुप, इन द सिस्टीन यू हैव डाइसल्फाइड ग्रुप. यहाँ पे डाइसल्फाइड क्यों आया, यहाँ पे आ चुका है डाइसल्फाइड. सो इन द सिस्टाइन you have sulfhydryl group, in the cysteine you have disulfide group, and methionine you have thioether. In the methionine you have thioether. In the methionine you have thioether. बाकी तो स्ट्रक्चर सेम है, thioether. So cysteine, sulfur containing amino acids, there are three, C square M. Okay, C is cysteine, C is cysteine, M is methionine. Is that clear? Yes or no? Now next, yes or no? समझ लगा? Now next category is nothing but the acidic amino acids and their amides. Acidic amino acids and their respective amides. So in that again you can remember A square G square. ना A का स्क्वायर करो, G A G O G लो, G सुनो G, वैसा A square G square. A square मतलब क्या, aspartic acid, and दूसरा A मतलब aspargine. तो A square aspartic acid and aspargine. So aspartic acid का स्ट्रक्चर क्या है, this is the aspartic acid का structure. Now it is a whatever amino acids we have seen, it is a monocarboxylic acid. जो अपने GAVAL है, गवली और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, और ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो भी देखे वो सब क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है. नाउ इट इज अ मोनो अमीनो, दिस एस्पर्टिक एसिड इज अ मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे देखो अमीनो कितना है, एक ही है, तो मोनो अमीनो. कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कितना है, दो है, डाइकार्बोक्सिलिक. मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है aspartic acid, right? So this carbon is known as alpha, you know that, and this carbon is now beta. So which functional group is there? Beta carboxy. कौन सा functional group है भाई, beta carboxy, right? So in the aspartic acid, aspargine means it is a respective amide. aspargine क्या है, जो aspartic acid है उसका amide है, CO मैंने जो यहाँ पे NH2 लगा दो. So aspartic acid is the acidic amino acid and respective amide is aspargine. That's why in the aspargine you have amide group. Right? Now next one is glutamic acid and glutamine. Glutamic acid and glutamine. है ना, A square हो गया, अभी G square की बारी है, G square. So glutamic acid, so जो aspartic acid है उसमें और extra CH2 लगा दो, हो गया मेरे glutamic acid. Right? So in the aspartic acid you are having beta carbonyl group, so therefore यहाँ पे आएगा gamma carbonyl group. ये एक additional कार्बन आ चुका है, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा कार्बन, ये फिर आएगा आपका गैमा कार्बन, गैमा कार्बोक्सी. ओके, सो इन द एस्पर्टिक एसिड बीटा कार्बोक्सी, इन द aspargine amide group is there, in the glutamic acid gamma carbonyl group is there, and in the glutamine again amide group is there. तो वही ये एसिडिक अमीनो एसिड एंड देयर अमाइड्स. ग्लूटामिक एसिड का अमाइन कौन है, अमाइड डेरिवेटिव कौन है, ग्लूटामाइन. That's it. So glutamine. Okay. Now next होता है आपका बेसिक अमीनो एसिड. ना पहला क्लास था आपका एलिफेटिक
अमीनो एसिड कंटेनिंग एलिपेटिक साइड चेन, सेकंड क्लास था आपका OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, थर्ड क्लास था आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, फोर्थ क्लास था आपका एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड देयर अमाइड्स, फिफ्थ क्लास है आपका बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड का ट्रिक तो मैंने बोला है, ला LAH, L फॉर लाइसिन, A फॉर अर्जिनिन एंड H फॉर हिस्टिडीन, LAH ला। सो लाइसिन हैविंग गामा अमीनो ग्रुप, लाइसिन में सॉरी इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप होता है, इप्सिलॉन अमीनो, क्योंकि इसमें क्या है देखो अभी, दिस वन इज नॉट अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज गामा, दिस वन इज डेल्टा एंड लास्ट वन इज इप्सिलॉन, इप्सिलॉन। सो इप्सिलॉन के ऊपर अमीनो ग्रुप है, सो इप्सिलॉन अमीनो है ना, वो फंक्शनल ग्रुप है उसमें। और नेक्स्ट होता है अर्जिनिन, तो अर्जिनिन में क्या है कि यहाँ पे गोनेडिनो ग्रुप है, गोनेडिन, गोनेडिनो ग्रुप, ओके। गोनेडिनो ग्रुप क्या होता है, NH C डबल बॉन्ड O, सॉरी NH C डबल बॉन्ड NH2 NH2, दैट इज नोन एज अ गोनेडिनो ग्रुप। सो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कौन से अमीनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सो इन द arginine you have gonadino group, okay, and that's why this is a biosynthetic precursor for nitric oxide. So nitric oxide जो एंडोथेलियल रिएक्शन पर उसमें NO2 होता है ना, तो वो आता कहाँ से, सो दैट्स व्हाई अर्जिनिन इज अ बायो प्रिकर्सर फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड। लास्ट में आता है आपका हिस्टिडीन अमीनो एसिड, लास्ट में मतलब ये बेसिक कैटेगरी। सो हिस्टिडीन, इसमें हिस्टिडीन में क्या रहेगा, इसमें रहेगा इमिडाजोल रिंग, so imidazole ring. So remember basic amino acid LAH la, okay. So in that lysine epsilon amino group is there, in the arginine you have gonadino group, in the histidine you have imidazole group, remember, okay. So classes याद रखो, okay. Now next we'll see aromatic amino acids, aromatic amino acids. So obviously aromatic amino acids, as name indicate they are aromatic having, aromatic amino acid means they are having aromatic ring, aromatic ring मतलब कुछ बेंजीन होगा या फिर फिनाइल होगा या फिर आपका यहाँ पे कोई दूसरा हेटेरोसाइक्ल होगा। So in that you are having three amino acids, so first one is a phenylalanine, okay, second one is a tyrosine and third one is nothing but the tryptophan। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड का नाम याद रखना है आपको, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं, ओके। फिनाइलअलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। और फिनाइलअलानिन स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइलअलानिन यू हैव बेंजीन रिंग और फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग और फिनाइल रिंग, सो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइलअलानिन। बाकी ये तो कॉमन रहेगा फिनाइलअलानिन। और इसमें ही एक OH ऐड कर दो यहाँ पे, इफ यू अटैच OH यहाँ पे, OH ऐड किया बन जाएगा टायरोसिन, टायरोसिन, okay. Now both these are the amino acids which are very very important, because these are the biosynthetic precursor for your कैटेकोलामाइंस, जो भी आपका एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामाइन है ना, सो वो जो बनता है वो कहाँ से बनता है भाई, फिनाइलअलानिन एंड टायरोसिन से। और जो लास्ट स्लाइड में देखा था आपने हिस्टिडीन, दैट इज अ बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर फॉर हिस्टामाइन, हिस्टामाइन कहाँ से बनता है, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है, that's why amino acids are again very important. So in the phenylalanine you have benzene ring or phenyl ring, in the tyrosine you have phenol ring, okay. Now tryptophan, in that you have indole ring, tryptophan you have indole ring, so tryptophan, so again very important amino acid is there known as a tryptophan, indole ring is there, indole ring. Now from tryptophan you are going to have 5-hydroxytryptamine, that is a serotonin, so it is a biosynthetic precursor for serotonin। क्वेश्चन वैसे ही आएगा आपको कि अमीनो एसिड का इसमें, so which amino acid is a biosynthetic precursor for catecholamines, so both phenylalanine as well as tyrosine, क्योंकि phenylalanine का ही हाइड्रोक्सिलेशन हो गया टायरोसिन बनता है ना, एंड tryptophan is a biosynthetic precursor for your serotonin है ना, हिस्टिडीन इज बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर फॉर हिस्टामाइन। लास्ट में आता है आपका इम्यूनो एसिड्स, तो क्या लिखा है यहाँ पे, इम्यूनो एसिड्स, whatever we have seen those are known as amino acids, or it is known as a amino acid, for example is nothing but the proline है ना। क्वेश्चन आता है आपको, one of the proline is known as a amino acid है ना, amino acid,
क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप नहीं है, यहाँ पे इम्यूनो ग्रुप है, इम्यूनो. सो स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोलीन इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन इज नथिंग बट लाइक दिस. सो पायरोलिडिन रिंग इज देयर. कौन सा रिंग है यहाँ पे? पायरोलिडिन. ठीक है, पायरोलिडिन, पायरोलिडिन रिंग इज देयर. And remember, this proline is a structure. It is amino acid found in the structure of captopril. Captopril नाम का जो ड्रग है, ACE inhibitor. Captopril नाम का जो ड्रग है, ACE inhibitor, उसमें ये प्रोलीन रहेगा. Right? So proline is nothing but the 20 number amino acid known as a amino acid. Basically, it is not a amino acid; it is a amino acid. याद रखना है. Are you getting or not? समझ रहा है आपको? I'm taking very slowly. क्वेश्चन वैसे आता है, बेसिक बेसिक चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे. तो व्हाट इज जनरल स्ट्रक्चर? वी हैव ऑलरेडी सीन. सो जनरल स्ट्रक्चर मींस अमीनो एसिड मींस यू आर गोइंग टू हैव टू ग्रुप्स, अमीनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप which is attached to a same carbon. Now that carbon is known as alpha carbonate. Right? That carbon is known as alpha carbonate. Now amino acids in the body exist as ion. Amino acids in the body exist as ion. ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन बट amino acid will it exist in the body in the form of ions, and that's why COO minus and NH3 plus. So amino acid exists in the body in the form of ion. Okay, ions. Now if amino acid is placed in the if amino acid is placed in the basic environment, so so it will act as a acid, and if it is placed in the acidic environment, it will act as a base. Okay, right? So because on the amino acid you have acidic group, okay, CO minus plus basic group. Now there is a one pH, the pH at which amino acid exists as a deuterion or deuterion or deuterion or hybrid ion. Okay, the amino acid which exists at a amino acid at a pH, the pH at which amino acid which exists as a deuterion, it is known as a isoelectric pH of your amino acid. Okay, isoelectric pH क्या होता है? The pH at which amino acid will exist as a deuterion. I will explain it. Okay, before that understand this. L and D amino acids. So it is a structure of D-glyceraldehyde. This is a functional group CHO. It is a terminal alcohol group. Now OH group, if this OH group present on the second carbon atom, if it is on the same side as that of the terminal alcohol group, so it is known as a D-glyceraldehyde. And in reference to this D-glyceraldehyde, T-glucose is the term. Okay, तो अगर ग्लूकोज में भी, ग्लूकोज स्ट्रक्चर में भी अगर ये OH वाला और ये अल्कोहल का OH वाला सेम साइड पे है तो उसको बोलेंगे डी ग्लूकोज. अगर वो अपोजिट साइड पे तो उसको बोलेंगे यल ग्लूकोज. वैसे ही मतलब D-glyceraldehyde. So OH group present on the second carbon is on the same side as the OH alcoholic group of terminal carbon known as a D. Okay? And if they are on the opposite side, if they are on the opposite side, they are known as a L. Okay, so in reference with this also, yeah, amino acids are also designated as a D amino acid and L amino acids. So L amino acid, D amino acid, तो देखो NH2 group, okay, and terminal, okay, NH2 group and COH group, they are on the same side, and NH2 group and COOH group, that is on the opposite side. So D amino acid मतलब क्या? Same side, और L amino acid मतलब क्या? Opposite side. And remember, in the most of the nature, L amino acid is present. नेचर में कौन सा होता है? बॉडी में कौन सा होता है? L amino acids. So L amino acid is present in the, okay, L amino acid is there in the body. D amino acid नहीं होता है, L होता है. ठीक है, याद रखना. If you place the amino acid or if you keep amino acid in the acidic pH, okay, at a low pH, amino acid will behave like a base. If you place amino acid in the basic medium, that is at a higher pH, amino acid behave like a acid, anion. Okay, so in the acidic pH, amino acid will behave like a cation. In the basic pH, amino acid will behave like an anion. Okay, and that's why it's actually similar to buffer. You know, buffer के जैसे action होता है. But there is a one pH
at which amino acid will exist as a zeta ion or bipolar ion. The pH at which amino acid will exist as a zeta ion, hybrid ion. It is known as the isoelectric pH of that amino acid. It is known as the isoelectric pH of that amino acid. Are you getting or not? समझ रहा है आपको? Every amino acid will have its own characteristic isoelectric pH. हर एक अमीनो एसिड का एक pH रहेगा जो pH में क्या रहेगा? So there is a existence of COO minus group as well as NH3 groups. NH3 group as well as COO minus group. So the pH at which amino acid will exist in a deuterion form, it is known as the isoelectric pH of that amino acid. Isoelectric pH of that amino acid. We will see the next. Now properties of amino acids. इसके physical properties, chemical properties क्या है? So solubility क्या है? Most of the amino acids they are soluble in the water. What is the melting point? They have a higher melting point. Okay? They have a higher melting point more than 200 degrees Celsius. So melting point उनका ज़्यादा होता है. Now taste क्या होगा? आपको तो पसंद है sweet taste. तो इसका भी taste sweet हो सकता है. So most of okay. So what are the amino acids or which amino acids are sweet in taste? So glycine, alanine and valine. Glycine, alanine and valine. Okay. Glycine, alanine and valine. GAV or VAG. GAV or VAG. Glycine, alanine, valine. They are the sweet in taste. तीन amino acid क्या होते हैं? Sweet होते हैं. और ये आपको पसंद नहीं आएगा. कौन सा? Bitter. So some amino acids they are bitter in taste. So arginine and isoleucine they are having bitter taste. Now leucine is the tasteless. Okay, glycine, alanine, valine they are sweet in taste. Bitter कौन होता है? Bitter taste होता है arginine and isoleucine. And leucine जो होता है that is a tasteless. If you are habitual of eating Chinese on the cart ना चायनीज गाड्यावरती तुम्ही काय करता? चायनीज खाता. चायनीज. So there is one amino acid derivative known as a monosodium glutamate. There is one amino acid known as a monosodium glutamate that is also known as a Ajinomoto. मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का एक अमीनो एसिड होता है ना, उसको ये अपना अजिनोमोटो बोलते हैं. एंड इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट टू एनहांस द टेस्ट, टू इंक्रीज द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ फ्लेवर एट द चाइनीज रेस्टोरेंट्स. ओके, चाइनीज लोग क्या करते हैं? वो सला हक्का नूडल है ना, हक्का नूडल, शेजवान नूडल वाला, वो उनका टेस्ट हैबिचुअल क्यों बनता है? बिकॉज दे आर हैविंग वेरी नाइस टेस्ट. क्यों क्यों आता है टेस्ट? बिकॉज दे आर यूजिंग मोनोसोडियम glutamate, MSG, Ajinomoto. So that is a taste enhancing agent or flavoring agent which is used to increase the taste. That's why आप बड़े चाव से खाते हो हक्का नूडल है ना, और वो क्या होते हैं शेजवान नूडल और भी कुछ बहुत सारा है. So now lot of people they are allergic to the Chinese food. बहुत सारे लोग जो है ना उसको चाइनीज खाने के बाद में उसको खुजली होता है. क्यों होता है खुजली? क्योंकि उसको एलर्जी है चाइनीज फूड का. क्यों होता है एलर्जी? Most of the few peoples they are allergic to the Chinese because this Ajinomoto or this monosodium glutamate, so they are intolerant to the monosodium glutamate and they develops Chinese restaurant syndrome. They develop Chinese restaurant syndrome. क्यों होता है? The person who is allergic to the monosodium glutamate, so it develops a quick and acute फ्लू लाइक सिम्टम्स. जैसे आपको सर्दी होने के बाद में जो सिम्टम्स आते हैं वैसे ही सिम्टम्स सबको आएंगे ये अजिनोमोटो अगर आपको एलर्जिक है. इफ यू आर एलर्जिक टू अजिनोमोटो दैट इज अ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सो यू विल गेट अ चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम. आपको चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम हो जाएगा. उसका सिम्टम्स क्या होते हैं? फ्लू लाइक सिम्टम्स, सर्दी खांसी लाइक सिम्टम्स. ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? ओके, ये बहुत सारी चीजें आपको कॉलेज में नहीं बोला होगा और ये सब वही यहाँ पे बोलते रहो. बिकॉज बायोकेमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इफ यू अंडरस्टैंड बायोकेमिस्ट्री यू विल अंडरस्टैंड द लाइफ. ओके,
Now next one is the optical properties of amino acids. So amino acid possesses optical isomerism due to presence of asymmetrical carbon atom. Now glycine is an optically inactive amino acid because there is no presence of asymmetric carbon in the glycine. All other amino acids are optically active. Now amino acids as an ampollite. Amino acid exists. Okay. Amino acid consists of both group, acidic or basic. That is, acidic group is COH and basic is a amino group. So amino acid exists as a zither ion at a specific pH and it is known as the isolated pH of that amino acid. Amino acid useful as a drugs. कुछ कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो ड्रग्स भी होते हैं जैसे डी पेनिसिलामाइन D-penicillamine, okay, is useful as a chilling agent and also used in the Wilson disease to chelate the copper. Wilson disease क्या होता है? Wilson disease is nothing but the copper poisoning. Wilson disease क्या होता है? Copper poisoning. It is used as a copper is used as chelating agent for copper poisoning. So used in the Wilson's disease. Now N-acetylcysteine. N-acetylcysteine क्या होता है भाई? It is an antidote for, yes, anybody? N-acetylcysteine किसके लिए antidote है? N-acetylcysteine is antidote for, yes, anybody? लिखा है, चलो लिखा है आप भूल गए. Is used N-acetylcysteine is used in the cystic fibrosis, okay, then chronic adrenal insufficiency and also antidote for paracetamol. Also it is an antioxidant. Now gabapentin is also amino acid. So gamma amino butyrate linked with the cyclohexane ring. So it is an anti-epileptic agent, gabapentin. So few amino acids and few amino acids which are used as a drugs. Now next we will see next point. Reactions of amino acids. Reactions of amino acids. Reactions of amino acids. Right. So you know amino acid has a two group, amino group and acidic carboxyl group. So reaction may be due to these two groups. So what are the reactions of carboxyl group? So reaction due to COOH group. तो इसके ऊपर क्या हो सकता है? ईस्टर रिएक्शन हो सकता है. So it will form a salt with the bases like sodium hydroxide. उसके साथ में बेस के साथ में salt बन सकता है. So formation of salt with the bases and formation of esters with the alcohol. That's it. ठीक है. Then due to again COH decarboxylation हो सकता है. रिमूव करो. Decarboxylation of amino acid will produce corresponding amines. COH group is in a dicarboxylic amino acid. जो amino acid में double COH group है. Okay. So COH और carboxylic group of dicarboxylic amino acid react with ammonia to form a amide. जैसे अपन ने देखा है aspartic acid aspartamine, aspartic acid aspargine, glutamic acid glutamine. And वैसे aspartic acid plus ammonia आपको मिलेगा aspargine. And glutamic acid plus ammonia glutamine. Right? So these are the reaction due to carboxylic group. Now reaction due to ammonia. तो ammonia के कारण क्या reaction होता है? Okay. So ammonia group behaves like a base and it can combine with the acid to form a salt. Second क्या है? Ni-nitrogen reaction. Ni-nitrogen reaction. So amino acid ni-nitrogen with the amino acid will give you purple, blue color or pink color complex known as a Rumens purpur. Rumens purpur color. Okay. Now amino acids have individual color reactions also. Color reactions of amino acid that will be discussed in a separate table. Now ammonium group जो NH2 group can be removed. That is known as transamination. Okay. So transfer of amino group from one amino acid to the keto acid to form a new amino acid. Now this is important in a metabolism. Transamination reaction important. Transamination मतलब क्या? Trans मतलब transfer. Amination मतलब क्या? Transfer of amino group. कहाँ से होगा? Amino acid से होगा. किसको होगा? Keto acid को होगा. To produce new amino acids known as a transamination. It is important in the metabolism. Next होता है oxidative deamination. Deamination मतलब removal of
अमोनिया, so रिमूवल होगा तो क्या तैयार होगा, अमोनिया तैयार होगा. So oxidative deamination result in the free ammonia. Okay. बाद में identification test भी है. So these tests are used for the sequence to measure the sequence or to analyze the sequence in the protein. प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड है और कौन से, उसके लिए ये रिएक्शंस होते हैं. कौन से, पहला होता है सैगनर्स रिएजेंट. क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सैगनर रिएजेंट. सैगनर रिएजेंट क्या करता है, ये जो अमाइनो टर्मिनस होता है, सो NH2 ग्रुप जहाँ पे होगा वहाँ पे वो बाइंड करेगा. सो दिस रिएजेंट, व्हाट इज द रिएजेंट, 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन. इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. सैगनर्स रिएजेंट, Sagnus reagent is nothing but the 1-fluoro-2,4 dinitrobenzene. So it react with the free ammonia group in the alkaline medium. Okay. Now Sagner was the first who analyzed the sequence of amino acid in the polypeptide. Sagner एक पहला कार्यकर्ता होता है जिसने क्या किया कि अमीनो एसिड कितने हैं ये प्रोटीन में, तो सीक्वेंस क्या है, पहला कौन सा है बाद में कौन सा है. So he was first who first to study the sequence of amino acid in the peptide known as Sagner, and he used the 1-fluoro-2,4 dinitrobenzene as a reagent, and from that time this reagent is known as the Sagner's reagent. Now next one is a reaction with the densyl chloride. Again amino terminus can combine with the 1-desmethyl amino naphthalene 5-sulfonyl chloride. So densyl chloride मतलब क्या, 1-desmethyl 1-dimethyl amino naphthalene 5-sulfonyl chloride, है ना. तीसरा होता है एडमंस रिएजेंट. एडमन, व्हाट इज दैट, अगेन सेम नाइट्रोजन amino terminus will combine with the phenyl isothiocyanate. ये रिएजेंट्स के नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. am I audible to you, are you getting or not? So this one is nothing but the Sagner's reagent. Sagner's test amino terminus के पर ही अटैक करेगा. This one is known as Edmonds reagent, isothiocyanate, phenyl isothiocyanate. It will also react with the amino terminus of amino acids. Now next one is nothing but the color reactions of amino acids. Again very important part is there. Color reactions of amino acids and proteins both. Very important question आता है इसके ऊपर. So there was a question in GPAT 2019. First reaction is known as a biuret reaction. So biuret reaction is given positive by at least 2 peptide linkage. जहाँ पे 2 peptide linkage होगा. Peptide linkage मतलब CONH bond. When 2 amino acids will come together to form a CONH bond. CONH bond. CONH. So biuret test is given positive by 2 peptide linkage. पहला एक क्वेश्चन था, biuret test is given positive by 2 peptide bonds, 2 peptide linkage. कम से कम for that you need a minimum 3 amino acids to become to form a 2 peptide bond. ना एक पेप्टाइड बॉन्ड जब किस में बनेगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड कब बनेगा, जब 2 अमीनो एसिड साथ में आएंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए कितना होना चाहिए अमीनो एसिड, 4 नहीं होना चाहिए. सो वो जो बना है 2 पेप्टाइड का, एक पेप्टाइड जो बॉन्ड बना है 2 अमीनो एसिड का, उसका एक अमीनो एसिड फ्री है, उसके आगे एक चिपका दो आइदर एंड से, हो गए 3 अमीनो एसिड. सो ए पेप्टाइड बॉन्ड will be formed between 2 amino acids. Okay, that is known as a monopeptide. Now for a 2 peptide bond you need a 3 amino acids. For a dipeptide you need a 3 amino acids. तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है. A dipeptide will have how many number of amino acids. तो बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया, 4 लिख दिया, है ना. तो मतलब बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए आपका, है ना. A dipeptide will have 3 amino acids. A tripeptide will have 4 amino acids. Tetrapeptide will have 5 amino acids. A pentapeptide will have 6 amino acids. We say decapeptide will have how many number of amino acids? Anybody? A decapeptide will have how many number of amino acids? 11 amino acids, right? A octapeptide will have 9 amino acids. क्योंकि octa मतलब क्या 8, लेकिन क्या है octapeptide मतलब 8 पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए.
अमीनो एसिड कितना होगा भाई 9 है ना। सो जितना पेप्टाइड उसके ज्यादा एक अमीनो एसिड लगेगा, राइट। सो बायोरेट रिएक्शन इज गिवन पॉजिटिव बाय 2 पेप्टाइड लिंकेज, क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आता है आपका नीन हाइड्रीन रिएक्शन। नीन हाइड्रीन रिएक्शन इट इज गिवन पॉजिटिव बाय अल्फा अमीनो एसिड। नीन हाइड्रीन टेस्ट इज गिवन पॉजिटिव बाय अल्फा अमीनो एसिड। और xanthoprotic reaction, xanthoprotic reaction, so it is given positive by aromatic amino acid. Xanthoprotic reaction जो होता है it is given positive by aromatic amino acid. So benzene ring present in the aromatic amino acid, tyrosine, phenylalanine and tryptophan. So these three aromatic amino acid they will give you xanthoprotic test positive. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आ चुके हैं। Now Mylon's region, Mylon's region is given by phenolic group of tyrosine, okay. जैसे phenolic group किस में अमीनो एसिड होता है, टायरोसिन में होता है। So tyrosine will give you this Mylon's reaction positive. Next होता है Hopkins-Cole reaction. So it is a specific reaction for indole ring. So indole ring किस में होता है भाई, tryptophan में। So tryptophan will give you positive this Hopkins-Cole reaction, right. Next होता है Sakaguchi reaction, है ना। Sakaguchi reaction, वो जो गोची है वो अलग है, जो आपका है ना, आपका जो सेक्रेड गेम्स का सेकंड पार्ट था उसमें जो गोची था वो अलग था। ये साकागुची रिएक्शन है, तो इसमें गोनेडिनो ग्रुप अगर होता है तो वो पॉजिटिव देगा। गोनेडिनो ग्रुप किस में होता है, अर्जिनिन में। साकागुची रिएक्शन इज स्पेसिफिक reaction for gonadino group. Then nitroposide reaction is there, which is given positive by amino acid known as sulfur containing amino acid. So sulfur group is present in the cysteine amino acid, cysteine, so that will give you nitroposide test. Sulfur test is given positive by again cysteine. Now इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है recently GPAT 2021 में. This Pauli's test is given positive by imidazole containing ring. So imidazole ring is found in the histidine. So histidine will give you Pauli's test positive color reaction. Now Follin Coicaltus test. Okay, Follin Coicaltus test is given by phenolic group of tyrosine. तो tyrosine के लिए दो रिएक्शन है, Follin Coicaltus रिएक्शन, Follin Coicaltus टेस्ट, एंड दूसरा है आपका है ना माइलॉन्स रीजन. सो माइलॉन्स रीजन एंड फोलिन कोलकाटी टेस्ट याद रखना है. कलर रिएक्शंस ऑफ वन एसिड वेरी इंपॉर्टेंट. टायरोसिन, these two tests, Mylon's test as well as Follin Coicaltus test is given positive by tyrosine. सिस्टीन के लिए कौन से है, सिस्टीन के लिए ये नाइट्रोपोसाइड वाला एक टेस्ट है और सल्फर वाला एक टेस्ट है, इज गिवन बाय पॉजिटिव सिस्टीन. तो साकागुची इसके लिए गोची होता है गोनिनो ग्रुप में, साकागुची यू कैन कोरिलेट गुची एंड गोनिनो. जी 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 किस में आता है, साकागुची में गुची आता है और गोनिनो में जैसे वो थे है ना, गोनिनो ग्रुप में भी जी यू आता है, साकागुची में जी यू आता है, वैसा कोरिलेट करके पढ़ो. Hopkins-Cole reaction that is for indole ring of tryptophan. Okay, biuret that is for 2 peptide nitrine और alpha amino acid xanthoprotic. Xantho means क्या होता है, xantho means color होता है. Xantho मतलब क्या होता है, xantho is a term, it is a Greek word for color. Benzene ring में aromatic amino acid में जो aromatic amino acid मिले वो color in their nature, that's why xanthoprotic reaction. Are you getting or not, समझ रहा है कि नहीं.